नमस्कार। नासिक क्रिकेट एकेडमी के मैदान से मैं आप सबका पहले हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री रमेश वैद्य सर, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री मकरन सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री अभिषेक राउत, इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 7वें दिन का पहला मुकाबला, 13वां मुकाबला ऐसे स्ट्राइकर्स और स्मैशर्स के बीच में खेला जा रहा है। ऐसे स्ट्राइकर्स के कप्तान ने पहले टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और स्मैशर्स के को पहले उन्होंने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है मैदान के ऊपर। हितेश गुजर तैयार गेंदबाजी के लिए, इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछल कर विकेट कीपर मिलिंद गांगुर्डे के हाथ में चल गई थी बिना किसी दिक्कत के। एक जोरदार अपील जरूर। आसमान बहुत साफ दिखाई दे रहा है, आज बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है और स्टेडियम हरा भरा नई दुल्हन जैसा सजा हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। खास करके आदरणीय श्री रमेश जी वैद्य सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता जा रहा है। इस बार ऑफ स्टंपर गेंद बैक पर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, देखते वहां पर कैच होता है या नहीं, लेकिन कैच हाथ को लगकर चला गया। कोशिश बहुत अच्छी वहां पर कैच लेने के लिए, लेकिन सूरज की तीखी आंखें उनके चेहरे पर चमक रही थी। कैचेस विन मैचेस। इस बार ऑफ स्टंपर अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने कवर क्षेत्र में, वहां पर कोई फील्डर नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक और कैप्स निकालने में सफल रहे बैट्समैन इस बार। आदरणीय श्री रमेश वैद्य सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कि रणजी प्लेयर भी है। उसके साथ साथ श्री अभिषेक राउत, जो कि महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा के रणजी ट्रॉफी के प्लेयर भी है और इस वक्त हालांकि वो उड़ीसा के कप्तान के रूप में खेल रहे हैं। पहले ओवर के समाप्ति 5 रन। रविराज यादव और फयाज गंजी फ्रॉक वाला बल्लेबाजी के लिए ऊपर मैदान के ऊपर, और फयाज सर ने 4 रनों के साथ अपना खाता खोला। टीम का कुल स्कोर 5 रन। कभी उतार कभी चढ़ाव का यह खेल। चौधरी प्रीमियर लीग 2022 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर दिनेश ठाकुर को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बैक पर जाकर अच्छा स्ट्रोक खेला रविराज ने, देखते हैं वहां पर डीप कवर क्षेत्र में एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरनाक साबित हो सकते थे लेकिन दूसरा रन मुकम्मल हुआ। क्या बात है। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरा रन फिल्डर के ऊपर दबाव डालकर लिया। जिसकी पूजा आप हर रोज करते हैं ना, वो फिर कब काम आएगी। रविराज यादव ने पिछले मैच में 79 रन बनाए थे, उसके बाद में 32 रन बनाए थे।
लेकिन आज देखते हैं एक बड़ी इनिंग खेलने का इरादा जरूर रखना पड़ेगा स्मैशर्स की तरफ से। इस बार शॉर्ट पिच गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, पुल करने की कोशिश मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री की तरफ 4 रन, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। कारपेट के सारे फिर चली गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्मैशर्स का। 2 अंकों में 11 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ रविराज यादव पहुंचे 7 रन पर, फैयाज सर खेल रहे हैं 4 रनों पर। दिनेश ठाकुर गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हैं। दिस पार्ट द प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय विनीत कंस्ट्रक्शन। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप जरूर लगाई है दिनेश सर ने। इस बार और पेज गेंद आगे आकर खेला उन्होंने, देखते हैं मिड विकेट क्षेत्र में से सीधी एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए, अंपायर का इशारा। श्री अभिजीत पवार, श्री अभिषेक यादव, ऐसे स्ट्राइकर्स और स्मैशर्स के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। ऐसे स्ट्राइकर्स के कप्तान ने पहले टॉस जीता, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, दावत दी उन्होंने स्मैशर्स को कि आप पहले आए और बल्लेबाजी करें। एक बार ऑफ स्टंप पर गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, कवर से ऊपर से खेला उन्होंने, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी। एक लंबा स्ट्रोक देखने को मिला, 6 रनों के लिए गेंद बाहर चली गई, अंपायर का इशारा। कहते ना कि जब तक अंपायर कुछ इशारा नहीं करते तब तक कॉमेंट्री के लिए गलत बात हो जाती है। 1-2 बार मेरे हाथ से भी ऐसी गलती हुई थी, माफ करना। इस बार ऑफ स्टंप पर गुड लेग स्पॉट से, लेकिन बैक फुट पर जाकर शरीर का संतुलन बनाया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, रविराज ने खेल दिया कवर के क्षेत्र में, लेकिन जब तक फील करते 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। भैया सर स्ट्राइक का सामना करेंगे। मिलिंद गांगुर्डे कीपिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। इस बार अच्छी गेंद बैक टू पर जाकर सही सम्मान दिया, भैया सर ने खेल दिया बैक टू बॉल और कोई रन नहीं। इसी के साथ दूसरे ओवर के समाप्ति हुई, 2 ओवर के समाप्ति हुई। आप सभी दर्शकों का, अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, श्री मकरन सर, श्री दिनकर जी कामड़े, श्री नितिन जी थाथर की इनकी ओर से। नासिक क्रिकेट एकेडमी का ये मैदान काफी सजा हुआ है। स्मैशर्स के ओनर श्री अनूप जी घाटे और श्री मोहित सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ शार्दुल सिंह स्ट्राइकर्स के श्री आर के सिंह और श्री शार्दुल सिंह का हार्दिक स्वागत करता हूं। दो ओवर के समाप्ति पर 22 रन, 18 रनों पर खेल रहे रविराज, फैयाज खेल रहे हैं 4 रनों पर। पीयूष दुगड़ को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। 2 ओवर के समाप्ति, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से 22 रन अब तक बने हैं, 22 रन
After 2 overs so far, good morning listeners and good morning all the viewers. The match between SS Strikers and Smashers being played here now. Nashik Cricket Academy ground. Have a nice day today. Have a very bright day today. इस बार अच्छी गेंद गुड लेन स्पॉट से हालांकि टप्पा खाने के बाद उछल कर आती लेकिन बैकफुट पर जाकर एक सही सम्मान दिया रक्षात्मक स्ट्रोक खेला संजय मांजरेकर जैसा स्ट्रोक और आजकल इस तरह के स्ट्रोक कहाँ देखने को मिलते हैं पीयूष दुगर तैयार गेंदबाजी के लिए इस बार लेग स्टंप पर हल्का से खेला उन्होंने इस खेल के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात एक रन से नहीं रोक पाते हैं एक एक रन के लिए कांटे की टक्कर चलेगी जरूर विकेट कीपर के अलावा कोई स्लीप नहीं है शॉर्ट थर्ड मैन एक गली एक पॉइंट एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑन मिड ऑफ एक स्केल एक हल्का सा फाइनल के क्षेत्र में ये रही फील्डिंग के साथ पीयूष गेंदबाजी के मोर्चे पर पीयूष दुगन ने पहले मैच में इसके पहले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया 4 विकेट लिए थे मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे भैया सर स्ट्राइक का सामना करेंगे इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप पर कलाई के साथ मोड़ने की कोशिश स्केले के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात चौहान सर लेग बाय का इशारा अंपायर का रन किससे से बनते कौन किसी की परवाह करता है लेकिन रन बनते रहना चाहिए चाहे वो वाइड के हो चाहे ओवर थ्रो के हो एक रन के साथ स्मैशर्स का कुल स्कोर 24 रनों पर पहुंचता हुआ रविराज यादव स्ट्राइक का सामना करेंगे एलपीएल में बहुत अच्छी प्रदर्शन रहा है इन खिलाड़ियों का इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर सही कंट्रोल के साथ स्ट्रोक खेला उन्होंने ऑन साइड में बिना किसी रन के विकास सर फील्ड कर दे लेकिन कोई रन नहीं नासिक प्रीमियर लीग 10 साल चली नासिक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लोकमत राजू स्टील द्वारा और रमेश वैद्य सर हमेशा ही वहां पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आते रहते थे आज भी हमें याद है इस बार ऑफ स्टंप पर बैक पर जाकर अच्छा स्ट्रोक खिला कौर से क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात एक रन लेने में कामयाब रहे पहले देखते रहे कि शायद गेंद बाउंड्री की तरफ चली जाएगी रविराज नॉन स्ट्राइक रन से अच्छी कॉलिंग हुई वहां पर फैयाज सर द्वारा अच्छी फील्ड करने का प्रयास वहां पर विकेट कीपर मिलिंद गांगुडे सर के पास से इसी के साथ ये तीसरे ओवर के समाप्ति 3 ओवर 25 रन हुए हैं 20 रनों पर खेल रहे हैं रविराज फैयाज सर खेल रहे हैं 4 रनों पर एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर होने चाहिए पहले विकेट के लिए जिस तरह से 103 रनों की हुई थी इसके पहले मैच में हालांकि दोनों खिलाड़ियों द्वारा फैयाज सर और रविराज यादव द्वारा एक लंबी इनिंग खेलने का अनुभव भी जरूर दाव पर लगाना चाहिए 3 ओवर के समाप्ति हुई 25 रन आफ्टर 3 overs score was on to 25 without loss both the batsmen playing so extremely very well piece of batting today calm and quiet so far दिनेश ठाकुर आए हैं गेंदबाजी के लिए इस बार लेग स्टंप पर गेंद हंसा पांडे के क्षेत्र में गेंद चली गई थी जब तक फील्डर वहां पर दौड़ते एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए ओवर थ्रो हुआ फैयाज सर दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अन वक्त पर इरादा बदल लिया जैसे कि वहां पर फील्डर को तैनात होते देखा
शुरुआती के ओवर जो होते हैं ना, वो सावधानियां बरतते हुए जरूर खेलना चाहिए। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको 20 ओवर का कोटा खेलना है। जल्दबाजी कुछ काम की नहीं होती। दिनेश ठाकुर गेंदबाजी का मोर्चा, उनका ये दूसरा ओवर, टीम के तरफ से आने वाला चौथा ओवर दिखाई दे रहा है। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खिला, कवर से क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं। फिर एक बार कवर्स में खेलने का अंदाज, वहां पर फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते, एक रन लेने का मौका। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्मैशर्स का 27 रनों पर, बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के। कहते ना कि जब आपका स्कोर अच्छा होता है ना, तो आपके बॉलर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। क्रिकेट की ये विशेषता भी है। इस बार ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने ऑन साइड में, देखते हैं वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर जा रहे हैं, विकास सर दौड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए जाती हुई। अच्छा स्ट्रोक, गैप्स निकालने में, गैप ढूंढने में कामयाब रहे इस वक्त रविराज यादव। दिनेश ठाकुर की गेंद पर 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन पर। रविराज यादव पहुंचे 25 पर। ओ, हवा में स्ट्रोक खेला जरूर, ठीक बॉलर के ऊपर से। 1 रन के साथ स्कोर 32 रन पर पहुंचता हुआ। भैया सर 5 रनों पर खेल रहे हैं। दिनेश ठाकुर तैयार, इस बार खेल दिया था हल्के से उन्होंने, ऑन साइड में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका, और इसी के साथ ये चौथे ओवर के समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति हुई, टीम का कुल स्कोर 33 रन। आदरणीय श्री रमेश जी वैद्य सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी है महाराष्ट्र के। और उसके साथ साथ श्री अभिषेक राउत का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिषेक राउत, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई और इस वक्त हालांकि उड़ीसा का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भी मैं नासिक क्रिकेट एकेडमी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पीयूष दुगड़ सामने वाली छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं इस वक्त भैया सर के लिए। This part the program brought to you by विनीत कंस्ट्रक्शन। श्री प्रकाश जी चौधरी, श्री विनीत जी चौधरी और श्री मयूरेश जी चौधरी, इनकी ओर से स्वागत है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद बैक पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया था पॉइंट के क्षेत्र में, डीप पॉइंट से फील्डर आते हैं, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका फैयाज सर के लिए। यही एक एक रन जब आप बल्लेबाजी के लिए आएंगे तब आपको बनाने पड़ते हैं। जितना एक्स्ट्रा देंगे उतना रन आपको बनाने पड़ेंगे। मिलिंद गांगुर्डे विकेट कीपर के रूप में एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, काफी ऊंचे कद के हैं। रविराज यादव खेल रहे हैं, स्ट्राइक का सामना करेंगे इस वक्त पीयूष के अगली गेंद का।
और शॉट भी गेंद बैक ऊपर जाकर खेलने की कोशिश, उनको मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। डी स्केल के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई, 4 रन के लिए अंपायर का इशारा। जैसे कि शॉर्ट पिच मिली, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, बैकफुट पर गए रविराज यादव, खेल दिया था स्केल के बीच में से, गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक, और इस तरह के स्ट्रोक देखते ही बन जाते हैं कभी कभी। गेंद हालांकि उनके बल्ले से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी। फिर एक बार शॉर्ट विथ गेंद को बैक वो जाकर हल्का सा खेला उन्होंने गले के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया इस वक्त दोनों खिलाड़ियों की, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई शक नहीं। नॉन स्ट्राइक रन से कॉलिंग होते है तो आप रन आउट से बच सकते हैं। तालमेल के साथ खेलना पड़ेगा आपको। कहते ना कि पूर्वी के जमाने में ऐसा कहते थे, रमेश सर हमें कहते थे कि आप पड़े रहो पड़े रहो। इस वक्त काफी हवा में स्ट्रोक था, बाल बाल बच गए वहां पर फैयाज से। पॉइंट के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद गेंद हालांकि फील्डर के हाथ में चली गई थी। कैचेस हाथ में नहीं आते, कैचेस को लेना पड़ता है तब बन जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर ऐसे स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों का, जी जान लगाकर फील्डिंग कर रहे हैं। कम से कम 4 रन के लिए बचा लिया उन्होंने। एक बार शॉर्ट पिच गेंद को हल्का सा ढकेल दिया उन्होंने, डीप थर्ड मैच के क्षेत्र में से सीधी गेंद आती हुई यहां पर कमेंट्री बॉक्स की तरफ 4 रन के लिए चली गई। कलाई के सारे मोड़ दिया डीप थर्ड मैच के क्षेत्र में से रविराज यादव ने, और इसी के साथ ये ओवर के समाप्ति का इशारा। 5 ओवर की समाप्ति पर 44 रन रविराज खेल रहे हैं, 35 पर भैया सर खेल रहे हैं 8 रन पर, और 5 ओवर के समाप्ति 44 रन बिना किसी नुकसान के। पीयूष दुगड़ 2 ओवर कोई मिडन नहीं, 13 रन कोई विकेट नहीं। 5वें ओवर के समाप्ति 44 रन बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के। दिनेश ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पर, यहां पर कमेंट्री में तब्दीली 5 ओवर के बाद मराठी की तरफ ले चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाइड, हालांकि नाशिक क्रिकेट अकॅडमीच्या या मैदानावरून मी आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा हल्ली स्वागत करतो। दिनकर ठाकूर गोलंदाजीचा मोर्चा सांभाळतायत। ऑफ स्टॉम्बर पडलेला चेंडू थोडासा बाहेर जातोय, वाढेल असल्याचा इशारा पंचांकडनं येतोय। दिनेश ठाकूरचा पुढचा चेंडू, यास मात्र चांगला चेंडू म्हणावा लागेल। ऑफ स्टंप कडनं लेग स्टंप कडे येणारा, थोडासा आतमध्ये गेलेला, आणि फैयाज सर त्या ठिकाणी त्रिफळाचीत झालेले, आणि अशा प्रकारे पहिला बळी त्या ठिकाणी दिनेश ठाकूर यांना मिळालेला। फैयाज सर बादून तंबूमध्ये परत आहेत। एक गडी बाद 44 धावा फलकावं लागलेल्या आहेत। एक गडी बाद 44 अशी धावसंख्या या ठिकाणी स्मॅशेसची आपल्याला बघायला मिळते। एस एस स्ट्रायकर्सच्या कर्णधाराकडनं नाणेफेकीचा कौल लागल्यानंतर त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता। श्री रमेश वैद्य सर, श्री मकरन सर यांचं मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतोय। एक गडी बाद 44 अशी धावसंख्या या ठिकाणी स्मॅशेसची बघायला मिळत होती, परंतु चेंडू खाली राहिला, आतमध्ये आला म्हणावं लागेल, आणि बॅटपॅड मधनं सरळ तो मिड स्टंपवर जाऊन आदळतोय। अशा प्रकारे या सर बाधून मात्र तंबूकडे परत आहेत।
दिनेश ठाकूर यांना मिळालेलं हे पहिलं यश, संघाला मिळालेलं पहिलं यश म्हणावं लागेल. या आधीच्या षटकामध्ये नाही म्हटलं तरी चोपून काढण्याचा प्रयत्न दोन्ही खेळाडूंनी केला होता. या षटकामध्ये मात्र दिनेश ठाकूर यांच्या पदरामध्ये यश पडलेलं. अतिशय तिखट मारा म्हणावा लागेल दिनेश ठाकूर यांचा. संदीप सोनवणे मैदानामध्ये गेलेले. ठाकूर याचा पुढचा चेंडू हा मात्र स्टंपकडनं लेग स्टंपकडे आहे. तो थोडासा त्यांनी तटून काढला तर ऑन साईडला. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय तोपर्यंत एक धाव घेण्याचा प्रयत्न दोन्ही खेळाडूंचा, परंतु सुरुवातीला हा नंतर नाना. अतिशय सुरक्षित क्षेत्ररक्षण असलेला हा एस स्ट्रायकरचा संघ. दरम्यान मिलिंद गांगुडे पुढे येतात यश रक्षक. दिनेश ठाकूर पुन्हा एकदा गोलंदाजीचा मारा करतायत. याच मात्र ऑफ स्टंपवरचा चेंडू बॅकफुटला सरसत त्यांना काढायचा होता गलेबंद. त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. धाव मात्र काही मिळत नाहीये. दोन्ही खेळाडूंना बांधून ठेवलंय का असं वाटतंय कदाचित. दिनेश ठाकूरनी या षटकामध्ये यश मिळाल्यानंतर त्यांच्या गोलंदाजीमध्ये उत्साह आलेला दिसतोय. याच मात्र चांगला फटका बघूया त्या ठिकाणी. मिड ऑफला चेंडू जातोय. दरम्यान एक धाव मात्र दोन्ही खेळाडूंनी पळून काढलेली. या एकेर धावमुळे संघाची संख्या पुढे जात आहे. रमेश सरांचं खूप हार्दिक स्वागत करतो. पत्रकार श्री दीपक जी ओडेकर सर, इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ. दीपक जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका. धन्यवाद.
इस बार गेल ये हालांकि एज लेकर चल गई थी डीप थर्ड बैंक के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात। एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन, ये रन आते रहने चाहिए। एक विकेट पर 47 रन, 47 for 1। इस बार ऑफ स्टंप पर पड़कर बाहर जा रही है, वाइड करार दिया अंपायर द्वारा। पीयूष दुगड़ सामने वाले छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभल रहे हैं। ऐसे स्ट्राइकर्स और स्मैशर्स के बीच में आज का ये 13वां मुकाबला। इस बार लेग स्टंपर का लगे सारे उसे मोड़ दिया था, उसके लगे अंपायर के बगल से, लेकिन जब तक फील्ड करते एक रन लेने का मौका, रन अपने आप नहीं बनते, रन को बनाया जा सब तक बनते, और रन बनाने की भूख होती तब बनते हैं। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्मैशर्स का। एक विकेट पर 49 रन, 49 for 1। रविराज यादव खेल रहे हैं 38 रन पर, और संदीप खेल रहे हैं 2 रनों पर। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, वहां पर, और कॉटन बॉल का चांस वहां पर कहां छोड़ने वाले पीयूष, और अच्छी छलांग लगाई उन्होंने, और कॉटन बोल्ड का ये विकेट मिलता हुआ, इसी के साथ ये संदीप के रूप में 2 रन बनाए। ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं कि जैसे कि गेंद आगे गिरी, खेल दिया था आगे आकर के, और बॉलर ने स्वयं अपनी गेंदबाजी के ऊपर एक अच्छा कैच लेने में कामयाब रहे पीयूष दुगड़, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिरता हुआ 49 रनों पर। संदीप सोनू ने आउट होकर जा रहे हैं, 2 रनों का योगदान दिया उन्होंने, और इसी के साथ एक मैसेज का दूसरा विकेट गिरा, 2 विकेट पर 49 रन। रविराज यादव के ऊपर फिर एक बार एक बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम को फ्रंट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। दीपक जी ओडेकर, श्री रमेश जी वैद्य, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एक रन के साथ स्मैशर्स के 50 रन पूरे हुए, 2 विकेट पर 50 रन। धरुशील ने 1 रन लेकर अपना खाता खोला। 38 रनों पर रविराज यादव स्ट्राइक का सामना करेंगे पीयूष दुगड़ की अगली गेंद का।
अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर खेल दिया था उसको। गले के क्षेत्र में से थर्ड मैन के क्षेत्र में एक रन पूरा किया, एक रन मिलेगा। गेंद हालांकि आती हुई मिलिंद गांगुर्डे के ग्लोव में बिना किसी दिक्कत के एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रनों पर 51 रनों पर पहुंचता हुआ ओवर के समाप्ति हुई 7 ओवर के समाप्ति पर 51 for 2। 8वां ओवर चल रहा है, टीम का कुल स्कोर 2 विकेट पर 56 रन। दरअसल सोलो ने खेल रहे हैं 5 रन पर, रविराज यादव खेल रहे हैं 38 रन पर। दिनेश ठाकुर गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद हल्का से खेला उन्होंने कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका धैर्यशील के लिए है। धैर्यशील पहुंचे 6 रनों पर, टीम का कुल स्कोर 57 रनों पर पहुंचता हुआ। इनका ये चौथे ओवर का ये इस बार बैकफुट उड़ाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन देखते अंपायर डिसीजन 2 रन का। अपने कोटे का ये अंतिम ओवर लेकर दिनेश ठाकुर मैदान के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। रविराज यादव देखते हैं, पिछले मैच में केवल 21 रन से उनका शतक चूक गया था, लेकिन आज देखते क्या करते हैं अपने टीम के लिए। 79 रन बनाए थे।
दिनेश ठाकुर तैयार गेंदबाजी के लिए ऑफ स्टंप पर ये गेंद हल्का से खेला उन्होंने कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात और इसी के एक रन लेने से नहीं रोक पाते हैं रविराज यादव को। इसी के साथ ये 8वें ओवर की समाप्ति हुई। आरएस चैलेंजर के खिलाफ 20 तारीख को उन्होंने 79 रन बनाए थे रविराज यादव ने। पीयूष फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बैक पर जाकर खेला उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात लेकिन कोई रन नहीं रविराज के लिए। रविराज खेल रहे हैं 41 रन पर। इस बार ऑफ स्टंप पर बैक पर जाकर खेला उन्होंने, गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर वहां पर तैनात थे रोहित सराणा, लेकिन उन्होंने ये देख लिया था कि भले ही क्या ड्रॉप हो लेकिन चौका नहीं जाना चाहिए। ये सही बात है उनकी, कैचेस तो मिलते रहेंगे लेकिन बहुत दूर भी थे वो वैसे कहा जाए तो। और सूरज की तीखी आंखें उनके चेहरे पर चमक रही थी रोहित के, लेकिन बाउंड्री बचाने में कामयाब रहे, 3 रन बचाने में कामयाब रहे, अच्छी बात है। धरुशील के लिए इस बार पीयूष दुगड़ गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर पड़कर विकेट कीपर के ग्लोव में चल गई थी। काफी ऊंचे कद के है मिलिंद जी गांगुड़े, उनके हाथ में चली गई। आजकल विकेट कीपर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पलड़ा भारी होता जा रहा है, किसको लिया जाए ये, लेकिन चुनौतियां बहुत होती है विकेट कीपर के सामने। दिनेश कार्तिक, फिर पंत, फिर दीपक हुड्डा। पूर्वी के जमाने में नयन मोंगिया, किरण मोरे भारतीय टीम के विकेट कीपर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर हल्का सा खेला खेला उन्होंने विकास सर के पास, फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग का प्रयास यहाँ पर ऐसे स्ट्राइकर्स के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। स्मैशर्स को उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए दावत दी, खास करके 2 विकेट पर 61 रन, 61 for 2। राइट और लेफ्टी का ये कॉम्बिनेशन टप्पा खाने के बाद गेंद उछल कर विकेट कीपर के हाथ में चल गई थी मिलिंद जी के, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। बाल बाल बच गए बैट्समैन, अन्यथा गेंद इनसाइड एज लेकर चली जाती विकेट कीपर के पास। धैर्यशील और रविराज देखते अपने टीम को किस तरह से बरकरार रखने में कामयाब होते हैं।
अभिजीत पवार और श्री अभिषेक यादव इस बीच अंपायर मैदान के ऊपर। और कहते हैं ना कि अंपायर द गॉड ऑफ क्रिकेट, ऑल द क्रिकेटर वर्शिप फॉर अंपायर। जितने की क्रिकेट में भगवान की पूजा नहीं होती ना, उतनी अंपायर की जाती है। आप सभी दर्शक जानते हैं। यूट्यूब के जरिए से जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। गेंदबाजी में परिवर्तन, रोहित सुराना को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। आशीष चौधरी सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। स्मिथ चंद्र कंस्ट्रक्शन के ओनर्स। स्मैशर्स के ओनर श्री अनूप घाटे सर, श्री रोहित सर, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ऐसे स्टार्कर्स के श्री आर के सिंह और श्री शार्दुल सिंह का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं इस मैच में। रोहित सुराना फील्डिंग सजा रहे हैं इस वक्त। इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई थी। अचंभित रहे बैट्समैन। गेंद ने काफी उछाल भी लिया था, हल्के सी स्टंप के पास से, और स्टंप के पास से चली गई थी विकेट कीपर के ग्लोव में। एक जोरदार अपील जरूर करना चाहते थे। इस बार ओवर पिच गेंद खेल दिया तो उसको ऑन साइड में फील्डर वापरता है तैनात, लेकिन इसके पहले डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक। हिम्मत जरूर दिखानी चाहिए। 2 विकेट तक गिरे तो रन नहीं बन सकता, ऐसी कोई बात क्रिकेट में नहीं होती। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रनों पर। दरअसल पहुंचे 10 रन पर, 43 रनों पर खेल रहे हैं रविराज। फिर एक बार लेग नंबर अगेन खेल दिया था उसको, फाइनल क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, देखते हैं अंपायर का इशारा 2 रन का वहां पर। अंपायर डिक्लेयर दैट 2 run so far and smashes 68 for 2. So 10th over will be progress now. 9.5 over gone. So 68 for 2. There is playing on 12 and the Raviraj Jadhav playing on 43. Where are the crease now?
रोहित सराना गेंदबाजी के लिए तैयार, अच्छी गेंद थी इस बार, गेंद काफी अच्छी थी लेकिन मिड स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के हाथ में चल गई थी। इसी के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए 10वें ओवर की चैनल को समाप्ति, सब्सक्राइब 10 करो ओवर की और समाप्ति बेल हुई, आइकन को टीम का दबाना कुल स्कोर 68 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। श्री मकरन सर, श्री नितिन जी धात्रक, श्री दिनकर जी कामड़े, इनकी ओर से आप सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। डिंग्स मैदान के ऊपर जा रही है, 10 ओवर के समाप्ति हुई, स्मैशर्स का कुल स्कोर 2 विकेट पर 68 रन। डिंग्स मैदान पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि खेल रखा हुआ है, दिस पार्ट द प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय विनीत कंस्ट्रक्शन, श्री प्रकाश चौधरी, श्री विनीत जी चौधरी, श्री मयूरेश जी चौधरी, इनकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ को स्पॉन्सर हमारे निदान लैब डॉक्टर भूषण निमाड़े, केड़कर हॉस्पिटल डॉक्टर सागर केड़कर, रॉयल ग्रुप निनाद निखाड़े सर, ऋषिकेश हॉस्पिटल डॉक्टर अनिरुद्ध भंडारकर सर, बाबा साई बेकर्स श्री पवन चौधरी सर, इम्प्रेसियो इंटरप्राइजेस श्री हर्षित पहाड़े सर, डेंटल केयर प्लस टूथब्रश डॉक्टर स्नेहल धात्रक, सुराना ज्वेलर्स नितिन धात्रक, धात्रक इन्वेस्टमेंट एंड स्मिथ चंद्र कंस्ट्रक्शन श्री आशीष जी चौधरी, इनके ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। खेल रुका हुआ है डिंग्स मैदान के ऊपर, तब तक के लिए मैं आपको स्टूडियो वापस ले चलता हूं। धन्यवाद।
कपिल पालेकर इस बार गेंद लेग स्टंपर कला के सर उससे मोड़ दिया था डीप स्केल के क्षेत्र में फील्डर देखते वहां पर पहुंच पाती या नहीं, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड लाइन के बाद चली गई। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही बड़ा विकेट गिरा रविराज यादव के रूप में। रविराज यादव ने 31 गेंदों का सामना किया, 43 रन बनाए। इस बार ऑफ स्टंप पर बैक पर जाकर स्टोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात रोहित सुराना जब तक फील्ड करते सीधा थ्रो आता हुआ विकेट कीपर मिलिंद गांगुर्डे के हाथ में 1 रन के लिए। कपिल पालेकर पहले ही गेंद पर विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं इस टूर्नामेंट में आज के मैच में। एक बड़ा विकेट लिया उन्होंने रविराज यादव का। रविराज यादव इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछल कर आती है, लेकिन हल्के से खेला उन्होंने शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, ओवर थ्रो हुआ, उसका कोई फायदा नहीं उठाया, लेकिन ठीक है, 1 रन से कम लेने में कामयाब रहे। कपिल पालेकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। अच्छी गेंद इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर हल्के से खेला उन्होंने ऑन साइड में। शॉर्ट स्केल के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात था और इसी के साथ ये 11वें ओवर की समाप्ति हुई। टीम का कुल स्कोर 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट कितने गिरे हैं जिसके बजाय रन कितने बने हैं, ये आपको स्मैशेस को देखना पड़ेगा, कप्तान को देखना पड़ेगा। विकेट्स को इतना महत्व नहीं होता, लेकिन कोई कोई विकेट ऐसे होते हैं, रविराज यादव जैसे बहुमूल्य होते हैं अपने टीम के लिए, फैयाज सर जैसे बहुमूल्य होते हैं। 11 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट पर 68 रन। देखते पहले टॉस जीता ऐसे स्ट्राइकर्स के कप्तान ने, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, पहले दावत दी उन्होंने स्मैशर्स को, आप आए पहले बल्लेबाजी करे। 11 ओवर की समाप्ति पर 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। रोहित सुराना आए हैं गेंदबाजी के लिए। दोनों ही नए बैट्समैन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश जरूर करेंगे रोहित सुराना। विकेट कीपर के अलावा कोई स्लीप नहीं, एक गली, एक पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक शॉट मिड विकेट। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बैक फुट जाकर कलाई के सारे मोड़ने की कोशिश, उनको पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है दोनों खिलाड़ियों की, रन बन सकते हैं। पूर्व के जमाने में कहते थे ना कि पड़े रहो, रन अपने आप बन सकते हैं, लेकिन रन अपने आप नहीं बनते, ये बात अलग है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा देर तक खेलने का संकल्प करते ना, तो रन बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि 3 विकेट पर रन नहीं बनेंगे। अब अंतिम गेंद तक रन बनते रहते हैं। ये देखिए विकेट गिरते रहेंगे, लेकिन रन बनाना बहुत ही आपका दायित्व होता है कि आप मैदान के ऊपर गए तो रन बनेंगे। कप्तान यही चाहते हैं।
रोहित सुराना फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार ओवर पेज गेंद को खेलने की कोशिश है उसको मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर ऊपर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मेरे साथी कमेंटेटर अमित सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। 3 विकेट पर 82 रन दरसिद खेल रहे हैं 18 के योग पर, और स्वप्निल नाउ स्ट्राइकर रन पर 8 रन पर खेल रहे हैं। रोहित सुराना गेंदबाजी के लिए तैयार, 12वां ओवर चल रहा है। इस बार बैक पर जाकर एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन भी वहां पर ऐसे स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी जी जान लगाकर फील्डिंग कर रहे हैं। अमित सानव सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे स्ट्राइकर्स के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर हल्के से बाहर जाती हुई ढकल देने में कामयाब रहे थर्ड बैंक के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन से नहीं रुक पाते हैं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रोहित सुराना नतीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 84 फॉर 3। रोहित सुराना तैयार, इस बार धोरेसिल के लिए ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद वाइड करार दिया अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा हुआ। टीम का कुल स्कोर स्मैशर्स का 85 रनों पर। यही एक एक रन बहुमूल्य साबित हो सकते हैं ऐसे स्ट्राइकर्स के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस बार पूरी तरह से बीट हुए और गेंद हालांकि डीप थर्ड मैन के ऊपर से जाती हुई। देखते हैं फील्डर वापर तैनात, बाय का इशारा अंपायर का, और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रन के लिए बाहर। स्मैशर्स के खिलाड़ी ये चाहते हैं कि रन आना बहुत ही बहुमूल्य उनके लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रनों पर, 89 फॉर 3। 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रोहित सुराना भी अचंभित रहे कि गेंद उनके पास से, विकेट कीपर के पास से चली गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर के समाप्ति का इशारा अंपायर का। 12 ओवर के समाप्ति, 89 रन 3 विकेट पर। देखते हैं आगे के ओवर में क्या कुछ छुपा है। इसके लिए अंग्रेजी में से अमित सानव से मैं विनती करता हूं कि वो कमेंट्री करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। Good morning, viewers. Welcome to day 7 of N.C.A.'s PPL 2022 Season 2. The match has been played between the Smashers and SS Strikers. The SS Strikers have won the toss and elected to field first. A good decision by SS Strikers. Is a slight change in fielding composition today for SS Strikers. They're playing with a different team. But a good start for Smashers so far. Ravi Jadhav has scored 43 runs in 31 balls with 5 fours and 1 6. Fayaz, 8 runs. Sandeep Sonune got caught and bowled by Piyush Dugad on 2. Now Dhairyashil is batting on 19. And Swapnil Lokhande, the captain himself, is batting on 9 runs. Hitesh Guzar, he's bowled the first over. Almost got the wicket of Raviraj Jadhav, but 1 over and 5 runs for Hitesh. Dinesh Thakur, wonderful spell, 4 overs, 36 runs for 1 wicket. Piyush Dugad, excellent bowling, 4 overs, 19 runs, 1 wicket. Rohit Surana, 2 overs, 16, and Kapil Palekar. What an important wicket that he got of Raviraj Jadhav. 1 over, 8 runs. So at the end of 12 overs, Smashers are batting on 89 runs for the loss of 3 wickets. And here we have Hitesh Guzar coming from practice ends
to Swapnil Lokhande. Swapnil Lokhande is known for his big hittings. Going to be a good contest. A slow ball. Hitesh Guzar is a very cunning bowler. He will play with the pace of a wicket for sure. He will not give any pace whatsoever to the batsman, and that makes it really good competition. A good contest between Swapnil Lokhande and Hitesh Guzar. Started with the slower ball outside the off stump. Another slow ball played towards covers. A smashing shot by Swapnil Lokhande. Played to his reputation for the first boundary of this over. As I said, this is going to be a wonderful contest between these two, because Swapnil Lokhande is known for his big hitting. Another shot of good length ball played towards covers region. Santosh in pursuit of a ball. Good pick up and throw. But meanwhile, a single to Swapnil Lokhande, bringing Dhairashil Sonone on strike. A left hand, right hand combination is always going to be difficult for the fielding side and a bowler as well. They have to adjust their line and length, and that makes it difficult for a bowler. Everybody needs to be on the toes. A good field set for Dhairashil Sonone. There's a third man, point, deep covers, long off, long on, mid wicket, deep square leg and a short fine leg. Going right arm round the wicket, Hitesh Guzar. Asking the fielder to come 5 yards in. Another slow ball played towards covers region. Santosh. That could be a good run out, but a good running between the wickets by Swapnil Lokhande and Dhairashil Sonone. Stole a single inside the circle. When you take runs like these, it puts pressure on the fielding side, especially when you're taking runs in the hands of fielders inside the circle. That puts an added pressure. Good running between the wickets by Smashers. Smashers have played really well so far. Hitesh Guzar, another slow ball played towards point region to Santosh. Another cheeky single for Swapnil Lokhande. A very sensible batting by Swapnil. They already had a boundary in this over. On a very second ball of this over now. Don't want to take any risk whatsoever. Sensible batting. So far, 7 runs have come in this over. Another slow ball played towards covers region. That could be a mix-up. A good pick-up and throw. Good stop by Vikas Kendre. Good teamwork. A good stop by Vikas Kendre. Good pick-up by Santosh. Almost had run out. End of the 13 overs. They've got only one single at the last ball. 97 runs for the loss of 3 wickets. A change in bowling for SS strikers. Santosh has come into bowl from commentary box end. Santosh Ghotekar, right arm off spin from commentary box end for SS strikers. Santosh Ghotekar has played 41 matches and taken 34 wickets with the economy rate of 6.68 runs per over, and his best is 3 for 15. Left hand batsman on strike, right arm off spin, so obvious.
A full length ball played towards covers region. Misfield by Kunal Shinde. Chetan in pursuit of a ball in vain. Went for a first boundary of this over. A slight lazy attempt by Kunal. Could have saved 4 runs for his team. Not a good start for Santosh Gotekar. Full length ball. Good cover drive by Shield, taking his individual score to 21 runs, 25 runs. Another shot of Gulen ball played towards cover region. Rohit Surana. A single to Hirishil Sonaune. A field change for Swapnil Lokhande. We have a short third man, short fine leg, deep square leg, cow corner. Or maybe deep mid wicket. Long on, long off. Deep covers, point. Swapnil Lokhande. Going to be an interesting contest. Swapnil Lokhande would love the ball coming into him. A tossed up ball, went for a huge hit. Santosh Gotekar coming underneath the ball, and that's a good catch. Tantalizing bowling by Santosh Gotekar. Tossed it up, invited batsman to go above the long on fielder. Failed to correct Swapnil Lokhande. Wonderful current ball, a good wicket for Santosh Gotekar. End of Swapnil Lokhande. With the fall of 4th wicket, Smashers have scored 102 runs in 13.4 overs, 3 overs. What a catch. Swapnil Lokhande must be very disappointed with his effort today. He had a great opportunity to score his runs. Sumit Shetty has come into middle. Good breakthrough for SS Strikers. That should rejuvenate SS Strikers to the rest of the innings. What a comeback. Santosh Gotekar. Been electric in the field, now giving his best with the ball. He'll have Sumit Shetty on strike. Still 3 balls to go. Good change of bowling by Piyush Dugad. Another tossed up ball. Tried to play towards cover region, got an outside edge, went to a third man for a boundary. A slight change in field has costed SS Strikers another boundary in this over. Santosh might have taken a wicket in this over, but being a bit expensive, SS Strikers would like to contain runs as well. They're leaking runs. A good start to Sumit Shetty. First ball boundary. Played towards covers region for a single. Kapil Palekar. Good throw in the hands of Milind Gangulde. Milind Gangulde is doing a wonderful job so far. We have Abhishek Zadav and Abhijit Pawar umpiring this game.
They both are good players of this leather ball, so they understand game really well. A full length ball played towards point region for a smashing boundary. Earned in the line, shot of good length ball. Derishil had to do nothing but just to place the ball in right direction. The third boundary of this over, a bit expensive over. At the end of 14 overs, the Smashers had 111 runs for the loss of 4 wickets. Thanks to our title sponsor, Chaudhari's Vinith Constructions, to sponsor this N.C.A. second season of PPL 2022. This is day 7. This match is very important in the points table that we have in this league. Now we have Vikas Kendre coming from practice ends. Another off spinner. Good bowling change by Piyush Dugat. Vikas Kendre, right arm off spin from practice ends to Sumit Shetty. A full length ball, fast ball. Good chance for current ball for Vikas Kendre. Good start to his over. Could not grab the ball. Must be disgruntled with his effort. Vikas Kendre, look at that. Tossed up ball, played right in the hands of Vikas Kendre. Missed out a good opportunity to take a wicket. Vikas Kendre has got the economy rate of 7.71 runs and the best of 7 wickets for 10 runs. A left-hand batsman Derishil Sonone on strike. There's a slight change in field. Vikas Kendre is very particular about his field set. Going right arm cutting through. He's got a field set of short third man, backward point, covers. A full ball. A good tossed up ball. Good tossed up ball to Dhaireshil Sonone. Tried to play towards long off region. A horizontal bat shot. Got an inside edge. Almost got close to the stumps. A good passage of play here. After this over, Smashers have only 5 overs to go, but they are placed in a very good stage. They'll need to do maximum out of these 5 overs. A shot of good length ball did not come onto the bat. Only single to Derishil Sonone. Vikas Kendre would not mind this. Piyush Dugat would not mind this as long as it's giving singles only. Because you have only 5 overs to go after this. Vikas almost had Sumit Shetty on his very first ball. It's going to be interesting how does he reply to the next ball. Another toss to ball, full toss. Dinesh Thakur coming underneath. Another easy drop. 2 balls, 2 catches, 2 drops. How unlucky that could be. And a good luck for Sumit Shetty. Sumit could not
Catch the opportunity of a full toss ball. Almost played high up in the air towards long on. And a rare miss by Dinesh Thakur. Short pitch ball played towards point region for a single with the end of this over. At the end of 15 overs, Smashers has 116 runs. There's still one ball to go. Shot of good length ball. Good dot ball. Good dot ball at the end of this over. So at the end of 15 overs, Smashers have scored 116 runs for the loss of 4 wickets. Rohit Surana. We thank our sponsors Nidan Pathology Lab, Royal Group, Chaudhari's, Vinith Constructions, Surana Jewelers. We thank all our sponsors to bring this event to life. All our online viewers, we thank you from the bottom of my heart. At the end of 15 overs, Smashers are batting on 116 runs for the loss of 4 wickets. And we have Rohit Surana coming up with his third over. Gave away 16 runs in first 2. Sumit Shetty on strike. It's going to be a very interesting contest because we have 4 overs to go. Right arm leggy. Will he cash on to this? Sumit Shetty. A full length ball played towards covers region. Kapil Palekar with the ball. A good throw to Milind Ganguly. Restricted batsman to a single. As you could see, that left hand right hand combination is keeping fielders on the toes. They'll have to keep on changing their positions from right to left, left to right, consuming a lot of time and energy as well. Good through a batting point of view. The more tired players are, the less fresh legs that they have. Rohit Surana, what plan does he have in his mind to a left-hand batsman? A quicker delivery went past through short third man for a boundary. A good cut shot by Dhareshil Sonone. There was a well-planned delivery by Rohit Surana, bowled really short delivery and went through the short third man region for a boundary. Another short delivery. A quicker delivery. Dhareshil Sonone asking for a wide. Good comeback by Rohit Surana. Bowling quickies. Another short delivery. A tossed up delivery appealed for a stumping by Milind Ganguly. He's been so good behind the stumps today, Milind Ganguly. Hasn't missed a ball today. Superb keeping by Milind Ganguly and a good comeback by Rohit Surana. 2 consecutive dot balls to Dhareshil Sonone. Dot balls are precious balls in this last death overs. Mind you, viewers, it is not that easy. Another quicker delivery played towards point region to Nilesh Chauhan. Meanwhile, he fields the ball. They stole a single.
A good stop by Nilesh. And a single to Darishil Sonone, bringing on strike Sumit Shetty. Gave only 6 runs in this over, which is commendable. Only a boundary in this over. Last ball of this over. Can he finish on high? Rohit Surana. One good ball. Sumit Shetty needs one big hit. They need to get started. Sumit Shetty on strike. One ball to go of this over. A full length ball played towards cow corner. Chetan Biraris. Underarm throw. Good throw. End of 16 overs. The Smashers have scored 123 runs for the loss of 4 wickets. They have Darishil Sonone and Sumit Shetty in the middle. Thank to our sponsors, Kerker Hospitals. Who sponsored our event, N.C.A's PPL 2022, Smith Chandra Constructions. There are a lot of sponsors who helped us to bring this event live. We all thank them. An interesting passage of play here between SS Strikers and Smashers. 4 overs to go, 123 runs for the loss of 4 wickets. And we have Hitesh Guzar coming from practice ends. He has given away only 13 runs in this over. Well bowled so far. Just to let our online viewers know that SS Strikers have won the toss and elected to field first. A shot of good length ball, slow delivery played in the hands of point for a single. Sumit Shetty. He's not able to connect the ball as he wants to. A good cutting bowling by Hitesh Guzar. Piyush Dugat marshalling his troops. He has done a fantastic job so far. Good change of bowlings and good change of ends for Hitesh Guzar as well. Another slow ball. Played over deep square leg for the first boundary of this over. Being too predictable it seems. A good shot by Darishil Sonone. As you could see, he was standing way. He just came inside and played over the deep square leg. A slog sweep by Darishil Sonone for the first boundary of this over. Rohit Surana was standing there. Another slow ball played in the hands of Rohit Surana for another single. A good batting display by Smashers. Good cricket all over. When you had Raviraj Zadav and Fayaz playing, we thought that they were going to score 200 runs today. But a good comeback by SS Strikers. Good change of bowling by Piyush. We have Hitesh, right arm over the wicket. Another slow ball. Played towards long on. RK. A good field and a good throw. Stop the batsman for a single. So far, good comeback by Hitesh Guzar. Sumit batting on 13. Dhairashil batting on 41. Dhairashil will have the onus on him to take on to the bowlers. He's been there for a long time. Another full length ball. There's a third man down there, Nilesh Chauhan. Good field by Nilesh Chauhan. Stopped 3 runs for his team for sure. A good throw to Milind Gangul's gloves. Wonderful fielding by Nilesh Chauhan. Mind you viewers, we have 2 senior players playing in the field. Nilesh Chauhan and RK Singh. 46 and 52 years old players who are fielding for us as strikers today. Commendable job.
R.K. Singh and Nilesh Chauhan. A full end delivery. Appeal for leg before. A leg by to end this over. At the end of 17 overs, they scored 132 runs for the loss of 4 wickets. Vikas Kendre is being brought back. Change of ends for Vikas. He started off with a good over, Vikas Kendre. One over, 5 runs for him. "17 overs have gone, 132 runs for Smashers. They still have 3 overs to go. And they still have Mahesh Zaveri to come, Subhash Pawar to come. It's very interesting to see that Subhash Pawar hasn't come yet. A swashbuckling batsman, Subhash Pawar. A shot of Goodland ball. Tried to play over the long on. Fetched the batsman coming out, fetched the batsman outside the crease. Played in the hands of Piyush Dugard. Good catch by Piyush. Good start to the over. Vikas Kendre, good comeback. He almost had Sumit Shetty on his first ball of his first over. And the history repeats itself. He got Sumit Shetty on the first ball of his second over. Look at that. Tossed up ball. Fetched the batsman outside the crease. Piyush Dugard made no mistake whatsoever. Subhash Pawar in the crease. As I mentioned that a swashbuckling batsman was still waiting on the seats. Subhash Pawar. Is it too late for them? A full length ball. Mind you, it is so difficult to start hitting from the first ball. Vikas Kendre is bowling really good. Second over. Third ball to go of this over. Tried to bowl way outside the off stump, coming out of the reach of Subhash Pawar. Vikas knows him really well. A very dangerous batsman, Subhash Pawar. Untossed up ball, tried to play over the cow's corner. Chetan Birari is coming underneath the ball. A good stop, a good underarm throw. Restricted batsman to a single. It is interesting to see that Mahesh Zaveri and Subhash Pawar, they've been kept way back in this innings. Very surprising to see them batting at 17. Smashers, they have a lot of firepower in their batting. They take pride in their batting. We have short third man, backward point, sweeper cover, long off, long on. And a full length ball. Hit and a miss. Good bowling by Vikas. Dhaneshil Sonone wanted to play it over deep square leg. Could not connect the ball. A good contest. Right arm cutting through. Vikas Kendre. Full length ball. Tried to play over deep square leg. Could not connect the ball. Hitesh Guzar coming underneath. That could be a good run out. Good throw.
But good running between the wickets by Dharishil Sonawne and Subhash Pawar. Fresh legs of Subhash Pawar has made it happen. 2 runs to Dharishil Sonawne. A good end to the over. End of 18 overs. The Smashers have scored 136 runs. Vikas Kendre, what an over. Gave only 3 runs in this over. What a comeback by SS Strikers. After the start Dr. Raviraj Zadav has given to Smashers, it was very difficult for them, but a good comeback. At the end of 18 overs, Smashers have scored 136 runs. Hitesh Guzar is bowling from practicing ends with his last over. He's been 3 overs, 21 runs so far. Subhash Pawar on strike. A slow ball. And first boundary of this over. Good start to the over. A pickup shot by Subhash Pawar. Smashers would love this. Another full length ball. Play towards cow corner, Kapil Palekar. It's difficult to field there. 2 consecutive boundaries for Subhash Pawar and Smashers. Good attempt by Kapil Palekar. Mind you guys, it's difficult to field on that hill. Poor start to Hitesh Guzar. 144 runs. Smashers. Another slow ball. Play over the head of long off for a swashbuckling 6. Subhash Pawar. What a batsman. A full length ball. A full length ball played over the head of long off for a huge 6. As I mentioned, Subhash Pawar has come into bat after 17 overs. Is it too late for Smashers? We will see. A shot of good length ball played towards point region to R.K. Singh. Good field there. Hitesh must be happy to get Subhash Pawar off the strike. He's been hit for 2 boundaries and a 6 in his first 3 balls. Being bit expensive, give away 15 runs so far in this over. Now Dharishil Sonawne on strike, batting on 44 runs. He's got the onus on his shoulder, Dharishil. He's been there in the field. He will have to take the charge. A slow ball played towards long on. Subhash Pawar would run for second. But a good throw by Piyush. Restricted batsman for a single. One good delivery. Hitesh Guzar. Subhash Pawar back on strike. Smashers would want Subhash Pawar to face all the balls that are left. A shot of good length ball. What a comeback. What a comeback. With the dot ball,
End of 19 overs. They have scored 152 runs for the loss of 5 wickets. Subhash Pawar went down the track. Missed out completely. Subhash Pawar batting on 16 in 7. Dareshil Sonone batting on 45, 5 short of his 50. Who is going to bowl the last over? Vikas has bowled a fantastic over. It's Vikas Kendre. And we have Dareshil Pawar, who's 5 short of his 50. Mahesh Zaveri yet to come. Dr. Swapnil Marathe yet to come. We have a par score of 170 runs here on this ground. Can Smashers reach to a par score of 170 runs? There will be a couple of questions will be unanswered at the end of this inning. Why Mahesh Zaveri and Subhash Pawar has come to bat so late? Would Dareshil Sonone take his team towards par score? 152 runs. 19 overs. Last over of this innings. Vikas Kendre. Right arm cutting through to Dareshil Sonone. We have short third man. Backward point. Point. Sweeper cover. Cover. Long off. Long on. A full and ball. A good bowling. A good wicket to Vikas Kendre. Milind Ganguly. Amazing keeping behind the stumps. What a bowling. A good start to the over. Dream start to the over. Vikas Kendre. He knew that the batsman is going to come down the track. He bowled short outside the off stump. Good collection by Milind Ganguly. Vikas Kendre rising to the occasion. Vikas Kendre. 2 important wickets. Bowling in death over is not that easy. Vikas is doing his job for his team. I thank all our online viewers from US, Australia, New Zealand, Europe to be online. Mahesh Zaveri has come into bat. 5 balls to go. I beg your pardon. Sachin Hange. Sachin Hange has come into bat. A full length ball. Milind Ganguly coming underneath. It is difficult to go backwards to take a catch. A good tossed up ball by Vikas Kendre. Hey. Went high up in the air. Milind Ganguly was in pursuit of a ball. Could not sight the ball properly. It is difficult when you're going backwards. Vikas Kendre. Another shot of good lane delivery. Played towards cow corner to Rohit Surana. A good field. Subhash Pawar wants to. Very high throw. Good running between the wickets. As I said, Subhash Pawar. Fresh pair of legs. Electric in the field. An amazing player, Subhash Pawar. Stole second in the hands of Rohit Surana. Took a chance on his throw. Vikas Kendre. A full length ball. It was out of the reach of a batsman. Sensible bowling by Vikas.
gave only a single. Vikas Kendre is bowling amazing last over. 2 balls to go in this over. We got Subhash Pawar on strike. Smashes one Subhash Pawar on strike. Will he clear the field? A shot of good length ball. Sachin Hange wanted to steal a run. Smart keeping by Milind Ganguly. Smart bowling by Vikas Kendre. A precious dot ball. 1 ball to go. 157 runs. 1 ball to go. Smashers would want Subhash Pawar to face the ball, and they have Subhash Pawar. Now Mahesh Zaveri has come into bat for the last ball. Amazing bowling by Vikas Kendre. He rose to the occasion for his captain. All hopes are pinned down to Subhash Pawar. Last ball of this innings. As I mentioned that we have a power score of 170 runs. Smashers are at 157 runs. Last ball of this over and the innings. Last ball. Can he finish on high? Vikas Kendre. Can Subhash Pawar clear the field? A shot of good length ball. Way outside the off stump. Got another wicket. Vikas Kendre got the better of Subhash Pawar. Good bowling by Vikas Kendre. Did not give the ball in the range of Subhash Pawar. If you see, he bowled way outside the off stump. Good collection by Milind Ganguly. Hapless Subhash Pawar could not do much with this. And a celebration. What a performance. 3 overs, 14 runs, 3 wickets for Vikas Kendre. Shardul Singh strikers. Good bowling display by Shardul Singh strikers. If you see Vikas Kendre, top of the top of the table, 3 overs, 14 runs, 3 wickets. What a bowling performance. Kapil Palekar got an important wicket of Raviraj Zadav, gave away 8 runs. Hitesh Guzar being expensive, Dinesh Thakur being expensive, 37 and 36 runs, no wicket for each. Piyush Dugad, what a spell. 4 overs, 19 runs, 1 wicket. And Rohit Surana, 23 runs from his stipulated 3 overs. Good batting display by Raviraj Zadav, scored 43, and Dharishil Sonawane 45. On the score of these two, they have reached to 157. It is interesting to see, and the questions will be unanswered. Why Subhash Pawar came back so late? He scored 16 runs of his 9, and Mahesh Zaveri was batting at number 9. Now that should be a question that to be asked and answered by Smashers. So at the end of 20 overs, the Smashers have scored 157 runs. As the strikers would need 158 runs from 20 overs. It will be a good chase to see. I'll see you after the break.
सुप्रील मराठी तैयार गेंदबाजी के लिए इस बार खेल दिया था उन्होंने ऑन साइड में। मिड विकेट से फील्डर आते लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका हितेश के लिए। इसी रन के साथ हितेश गुजर पहुंचे 11 रनों पर। पहली गेंद पर छक्का लगाया था उन्होंने, दूसरी गेंद पर चौका, फिर बाद में सिंगल। फिर एक बार और पेस गेंद तो आगे आकर उठा दिया, ठीक बॉलर के ऊपर से गेंद बाउंड लेंगे। एक टप्पा खाने के बाद बाउंड लंग ऑफ के ऊपर से बाउंड लाइन के बाद चली गई 4 रन के लिए। स्वप्निल मराठे, पहला ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। ऐसे स्ट्राइकर्स के कप्तान ने पहले टॉस जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था वो सही अब तक साबित होता हुआ। 15 रन हुए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं फील्डर वहां पर तैनात है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात, लेकिन तब तक एक रन लेने में कामयाब रहे पीयूष। पीयूष दुगड़ पहुंचे 5 रनों पर। हितेश खेल रहे हैं 11 रनों पर। स्वप्निल मराठे तैयार गेंदबाजी के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी। हल्के से केवल लाइन में आकर हल्का सा खेला उन्होंने, ऑन साइड में कोई रन नहीं। स्वयं स्वप्निल फील्ड करते किसी भी रन का ईदा पर नहीं अंतिम गेंद पर। इसी के साथ पहले महंगे ओवर के समाप्ति। स्वप्निल मराठे के 16 रन आए इस ओवर में। This part the program brought to you by Vinith Construction, Ninad Lab, Kelkar Hospital, Royal Group, Rishikesh Hospital, Baba Sai Bakers, Impressio Enterprises, Dental Care Plus Toothbrush, Surana Jewelers, and Smith Chandra Construction, Nitin Dhatrak. नासिक क्रिकेट एकेडमी के मैदान से मैं आप सभी दर्शकों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे स्ट्राइकर्स और स्मैशर्स के बीच में आज का पहला मुकाबला। संदीप का पहला और टीम की तरफ से आने वाला दूसरा ओवर चल रहा है। हितेश गुजर खेल रहे 11 रनों पर, पीयूष दुगड़ खेल रहे हैं 5 रन पर। 16 रन बिना किसी क्षति के। इस बार अच्छी गेंद आगे आकर खेल दिया था उन्होंने, ठीक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन तब तक एक रन लेने में कामयाब रहे। एक रन के साथ स्कोर 17 रनों पर पहुंचता हुआ।
158 रन का टारगेट सामने है। यदि मंजिल सामने हो, यदि लक्ष्य सामने हो, रन बनना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में हल्का सा खेला उन्होंने, जब तक फील्डर वापस दौड़ते एक रन लेने का मौका। पहले हाँ हाँ चली ना ना चली, बाद में रन लेना सोचा। संदीप सोनू ने अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर संदीप तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार लेग स्टंप पर हल्के से खेलने की कोशिश, उनको लेग साइड के क्षेत्र में देखते अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। इन 2 रनों के साथ स्कोर 20 रन पर पहुंचता हुआ। संदीप एक बार तैयार, इस बार हवा में। रविराज यादव पहले ओवर में स्वप्निल काफी महंगे साबित हुए। 16 रन आए, लेकिन इस ओवर में काफी सुधार किया है संदीप सोनू ने के। इस बार ओवर पेज गेंद आगे आकर खेल दिया था, ठीक बॉलर के ऊपर से देखते हैं फील्डर वापस तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड लाइन के बाहर चली गई थी, लंग ऑफ के ऊपर से। अच्छा शॉट, जैसे कि ओवर पिच गेंद मिली, आगे आए, अपने कदमों को इस्तेमाल किया, बैट्समैन ने खेल दिया था, ठीक बॉलर के ऊपर से गेंद बाउंड लगे बाहर चली गई थी, लंग ऑफ के ऊपर से। 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर के समाप्ति पर 25 रन। पीयूष दुगर खेल रहे हैं 10 रन पर, हितेश गुजर खेल रहे हैं 13 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति हुई, 25 रन बिना किसी क्षति के। देखते हैं 158 रनों का लक्ष्य किस तरह से पार करते हैं। आने वाला समय बताएगा, आने वाले समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं फील्डिंग में किसको लाया जाता है। लेकिन कमेंट्री में हल्की सी तब्दीली। अमित सर, जैसे कि 158 रन का लक्ष्य है, आपको क्या लगता है जिस तरह से हालांकि ऐसे स्ट्राइकर्स खेल रही हैं, स्वप्निल मराठे आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपना दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में 16 रन खर्च किए। As you mentioned, that 158 is a par score, but a good start for SS strikers. They have taken charge to Swapnil Marathe, their ace bowler. A full length ball played on the long on for another six of this over. He started with a six of this innings and he hit another six to Swapnil Marathe. Good batting display by Hitesh Guzar. A slower in swinger right in the
zone of Hitesh Guzar went high up in the air over long on's head for second six of this innings. As we discussed, that 158 is almost a par score, but you need to have good bowling lineup to defend the score that we have. The way that these two are batting, it seems that it's difficult for smashers to defend the score. स्वप्निल की पहली गेंद पर हालांकि सिक्सर लगा था और इस ओवर के ये एक और सिक्सर लगता हुआ. You have seen lots of matches before this in your career. What do you think? What do you make of this chase, or what do you make of these two batsmen who are batting in the middle against the quality bowlers that we have in smashers? What do you predict for this? यस, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि दोनों ही बैट्समैन जिस तरह से खेल रहे हैं, किसी भी तरह का दबाव उनके ऊपर नहीं है और काफी एहतियात बर के साथ खेल रहे हैं, गैप्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आकर खेलने की अपने फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं. स्वप्निल फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार. इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बैक फुट पर जाकर खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर तैयार थे. कवर के क्षेत्र में कोई रन नहीं. एक अच्छी गेंदबाजी का प्रयास स्वप्निल को जरूर करना पड़ेगा. उनकी टीम हालांकि काफी गर्व करती है उनके गेंदबाजी के ऊपर, निश्चित रूप से. Rightly said that Swapnil Marathe is their ace bowler. He has performed for his team in the past matches as well. So the onus and the responsibility of Swapnil Marathe to get an important wicket of these two in this over. Smashers would want Swapnil Marathe to get his line and length correct, because this is a very important start. If you take a wicket or two here, I'm quite sure the match will be balanced. इस बार अच्छी गेंद थी, आगे आकर खेल दिया था, लेकिन नॉन स्ट्राइकर के विकेटों के ऊपर जाकर गेंद लगती हुई, वहां पर लुढ़कती हुई. और ओनर्स हमेशा ही स्वप्निल के ऊपर भरोसा करते रहे, लेकिन इतना कि कभी कभी दिन नहीं होते, इसके वजह से हालांकि पीछे चले जाते हैं बॉलर. इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई. देखते हैं, अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश अभी भी जारी है. गेंद काफी अंदर आती हुई, लेकिन गेंद विकेट कीपर रविराज यादव के पास चली गई थी. स्वप्निल अभी भी अंपायर के साथ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त. A good comeback by Swapnil Marathe. Almost got a wicket off Hitesh Guzar. Ball swung into the Hitesh Guzar. Did not give pace whatsoever. So at the end of 3 overs, Shardul Singh strikers have scored 31 runs for loss of no wicket. Hitesh Guzar is batting on 19 in 12 balls. Piyush Dugar is batting on 10 in 6 balls. As we keep on saying that the par score on this ground is 158 runs, but you need to have good bowlers to defend the target that we have. Smashers do have good bowling lineup. They do have Subhash Pawar and Mahesh Zaveri, who can bowl really good. But the way that Piyush Dugar has batted throughout the series, I think he has scored a lot of runs in offside. Another full length ball played towards Curse region. Sachin Hange wanted to stop the ball, but it went down to 4. A good attempt to stop the ball. Took the knee of Sachin Hange and went to 4 to long off. What do you think about Piyush's batting that he's been performing in this season so far? पीयूष ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, अब तक उसमें कोई दो राय नहीं है. और एक मैच में उन्होंने 95 रन बनाए. एक लंबी इनिंग भी उन्होंने खेली है. पहले मैच में स्मिथ चंद्र कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी भी की थी.
And a good comeback by Sandeep Sonone. Shot of good length, took the outside edge of Piyush Dugat. Went in the gloves of Raviraj Yadav. Made no mistake whatsoever. Raviraj Yadav got up. Sandeep Sonone got better of Piyush Dugat on 14. He was batting really well. As we talk that, a curse of a commentator. You praise the batsman and he gives in. इस तरह से बाहर जाने वाली गेंद को निश्चित रूप से कट करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया, गेंद विकेट कीपर रविराज यादव के पास चली गई जिन्होंने कोई गलती नहीं की। कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, टेक द कैचेस विन द मैचेस, लूज द कैचेस लॉस द मैचेस। रवि चतुर्वेदी और खास करके अमित भी इसी का इस्तेमाल करते रहते हैं, अच्छे लेफ्ट का इस्तेमाल करते रहते हैं। बहुत बढ़िया लगता है इस तरह के, हालांकि जब वर्ड्स हालांकि सामने आ जाते हैं तो पहले विकेट का पतन हुआ ऐसे स्ट्राइकर्स। देखते हैं आने वाला समय, हालांकि एक अच्छी गेंदबाजी जरूर करनी पड़ेगी संदीप को। और कहते हैं ना कि जिस तरह से हालांकि भले ही पहले 2 ओवर में रन गए हो, लेकिन बाद में भी आप हालांकि कमबैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है, अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ आप मैच को टर्निंग भी कर सकते हैं। With the fall of Piyush Dugat, we have Ketan Biraris in middle. As I mentioned that to defend the par score or below par score, you need to have a good bowling attack, and smashers do have a good bowling attack. Another shot of Goodland ball. Ketan Biraris played towards mid wicket for a single. A very sloppy running between the wicket by Ketan Biraris, being very lazy. That could have been a run out. Sandeep Sonone. What a comeback by Sandeep Sonone, got an important wicket of Piyush Dugat. Another shot of Goodland ball, played right in the hands of Sandeep Sonone. It's been a good chase so far for SS strikers, and it's been a good defense by smashers as well. They've made a good comeback. A great breakthrough that needed, much needed breakthrough that they wanted, because these two batsmen. Another shot of Goodland ball, played towards square leg for a sensational boundary off the pads. There she goes. The first boundary of this over for Hitesh Guzar. जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर कला के सारे से मोड़ने की कोशिश की, लेग साइड के ऊपर गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई थी 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर 40 रनों पर पहुंचता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर 40 for 1। हितेश गुजर खेल रहे 23 रनों पर, केतन बिरारी खेल रहे हैं 1 रन पर। संदीप सोना ने फिर एक बार तैयार, अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप पर आगे आकर खेल दिया था ठीक बॉर्डर के पास से, लेकिन जब तक लंग ऑफ से फील्डर आते 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। रन अपने आप नहीं बनते, रन को बनाया जाए सब तक बनते रहते हैं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और इसी के साथ शायद ओवर के समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर का। The required run rate is dropping down. The required run rate is now 7.38, and SS Strikers are playing with the current run rate of 10.5. So great start for SS Strikers. What do you think, that we need to have a change of bowling in smashers, because the way that these two batsmen are scoring, do you think that they need to get their bowler, the main bowler, out in the field now? महेश जवेरी को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, महेश बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से, हालांकि विकेट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकेट लेने का आसार जरूर तैयार करते हैं पहले ओवर में, फिर बाद में विकेट लेना शुरू करते हैं। थोड़ा सा दबाव में लाना पड़ेगा, इसके लिए पहले विकेट लेने पड़ेंगे उनको, तब दबाव बढ़ जाएगा। दबाव अपने आप नहीं बनता जब तक आप विकेट नहीं लेते। आप अच्छी गेंदबाजी जरूर करें, लेकिन जब तक आपको विकेट नहीं प्राप्त होता तब तक अर्थ प्राप्त नहीं होता, और जब तक अर्थ प्राप्त नहीं होता तब तक खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्थ के ऊपर
अमित जी, दुनिया चल रही है, आपके पास कितना पैसा हो, कितना गाड़ियां है, इसके ऊपर सेंसेक्स नहीं बढ़ता, लेकिन आप एक दूसरे को किस तरह से मदद करते हैं, एक दूसरे को कितने आप सहायता करते हैं, इसके ऊपर हिंदुस्तान का सेंसेक्स बढ़ जाता है। ये बात होती है क्रिकेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। Talking about the relations, I'll give you an interesting fact. Mahesh Zaveri has come into bowl, right arm leg spin. And to let you know, viewers, Mahesh Zaveri has been a coach for Hitesh Guzar. He has coached Hitesh Guzar for so many years. It is going to be interesting to see a Guru and a Chela contest here on the pitch of N.C.A. Mahesh Zaveri will be bowling to his favorite pupil. A full length ball, played towards long on for a fast ball boundary. A tossed up ball, played up in the air towards long on. A good start to the over, putting pressure on Mahesh Zaveri right from the first ball. Hitesh Guzar. Another ball, all in the line on leg side. Helped the ball to go to the boundary line on a short fine leg for two consecutive boundaries of this over. This must take the pressure off Hitesh Guzar and put the pressure on Mahesh Zaveri. जैसे कि लगातार दो चौके लगे, तो निश्चित रूप से गेंदबाजी के ऊपर हालांकि दबाव डालने में कामयाब रहे हैं हितेश गुजर। इन दो लगातार बाउंड्री के साथ साथ 32 रनों पर पहुंचे। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ टीम का कुल स्कोर 50 रनों पर, एक विकेट पर 50 रन। भाई जवली फिर एक बार, इस बार ऊंचा स्ट्रोक करने की कोशिश, लेकिन बाहर किनारा लेकर चली गई थी। वहां पर गली के क्षेत्र में कोई फील्डर वहां पर तैनात थे कैच लेने के लिए। एक लंबा स्ट्रोक करने की कोशिश की और इसी के साथ एक अच्छा विकेट मिलता हुआ भाई जवेरी को अपने पहले ओवर में। भले ही दो गेंदों पर लगातार दो चौके, लेकिन विकेट लेने में काफी कामयाब रहे। What a contest it was. At the end, the Guru got the better of its pupil, Mahesh Zaveri. Mahesh Zaveri enticed Hitesh Guzar to play outside the off stump. The ball went up in the air to the point region. Swapnil Marathe made no mistake whatsoever. An important wicket for Smashers. Even though Smashers are leaking runs, but they are taking wicket on regular intervals. Is this going to be a game changer for Smashers? A good change of bowling by Swapnil Lokhande. In this run chase, Shardul Singh strikers need to keep their wickets in hand. It's just a par score. And Smashers need to take wickets. Swapnil Lokhande would want his bowlers to bowl in line and take more wickets as much as possible. So far, both the openers are back into the dugout. Now we have two new batsmen batting in the middle. Rohit Surana replacing Hitesh Guzar. Rohit Surana, who played a sensational knock in the last innings, scored 50. It's going to be interesting to see how he tackles this pressure. अभी जी सही आपने कहा कि इसके पहले मैच में उन्होंने 57 रन बनाए थे अपने टीम के लिए। बहुत अच्छा खेल का योगदान भी उन्होंने दिया था। आज देखते हैं किस तरह से लंबी इनिंग खेल पाते या नहीं, आने वाला समय जरूर बताएगा। वैसे तो वो काफी हुनार खिलाड़ी है, लेकिन गेंदबाजी की प्रशंसा करनी पड़ेगी इस वक्त महेश झवेरी की। विकेट लेने में कामयाब रहे हैं और प्रेशर डालने की कोशिश करते या नहीं, आने वाला समय बताएगा। फील्डर को काफी नजदीक बुलाया उन्होंने। Starting with the two slips. A tossed up delivery off spin ball played towards cover for a single off the mark with a good back foot punch. Rohit Surana. As he mentioned that Rohit Surana needs to play a long inning this time if they want to win this game. A tossed up ball played high up in the air or deep mid wicket to boundary, third boundary of this over.
Ketan Biraris, who's known for his big hitting, does not waste time. स्मिथ चंद्र कंस्ट्रक्शन के खिलाफ उन्होंने 59 रन की एक महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की थी रोहित सुराना ने पिछले मैच में। टीम का कुल स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वही जवेरी तैयार गेंदबाजी के लिए 14 रन खर्च किए इस ओवर में उन्होंने एक बहुमूल्य विकेट जरूर लिया, खास करके जिसकी तलाश थी उनको। इस बार आगे आकर उठाने की कोशिश की, देखते हैं गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड लाइन के बाद जाती हुई 6 रन के लिए। जैसे कि ओवर पिच गेंद मिली, आगे आए, अपने कदमों को इस्तेमाल किया, खेल दिया था ठीक बॉलर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड लाइन के बाहर चली गई 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा। 6 रनों के साथ स्कोर 61 रन ऊपर पहुंचता हुआ 2 विकेट पर 61 फॉर 2। दोनों ही बैट्समैन इस जिस तरह से खेल रहे हैं, बल्लेबाजी का रुख अपना रहे, गेंद उनको फुटबॉल की तरह से दिखाई दे रही है। 5 ओवर के समाप्ति, टीम का कुल स्कोर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अमित जी Absolutely right. As this been playing under par score, it was a very expensive over by Mahesh Zaveri, even though he has taken a very important wicket of Hitesh Guzar, who has been instrumental in the wins of SS Strikers. But he has given away 19 runs in this over. 3 boundaries, a 6, and a single. Ketan Virari is batting on 11 runs in 3 balls. Now we have Sandeep Sonune, who got better off Piyush Dugat in the last over. Rohit Surana will face Sandeep Sonune. As you mentioned, that Rohit Surana played an important role against Smith Chandra Constructions to take the team towards 200. SS Strikers would want Rohit Surana to bat to the end if they want to win this game. Ketan Birari is taking the pressure off Rohit Surana, so he has a good time to settle in. Meanwhile, Sandeep Sonune, right arm over the wicket. A shot of woodland ball played towards cover region to Sachin Hange. A good dot ball, start with the dot ball. Rohit Surana, he loves to play on the front foot. He's got good range of shots in his kitty. Another shot of Goodland ball played in the hands of Sachin Hange. 2 similar balls, 2 similar shots and 2 similar results. लगातार 2 डॉट गेंदे इस वक्त, हालांकि संदीप सोनू के इस ओवर में आगे आकर खेलने की कोशिश की, लेकिन सचिन हानगे ने बहुत अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन भी किया। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक किया उन्होंने, खेल दिया था ऑन साइड में, सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। कॉर्नर के ऊपर से गेंद को ढकेल दिया उन्होंने, अच्छा स्ट्रोक, और इसी के साथ ये गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। जैसे कि गेंद मिडिल स्टंप पर मिली, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, डीप पेंडवेल के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 65 फॉर 2। रोहित सुराना मुजान 2-5। इस बार अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेला, ऑन साइड में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन तब तक रोहित सुराना ने 1 रन लेने की जरूर वहां पर कोशिश की। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 66 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित पहुंचे 6 रनों पर। संदीप तैयार गेंदबाजी के लिए, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन ऑन साइड में एक अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दूसरा रन भी लेने की कोशिश वहां पर केतन बिरारी द्वारा। केतन पहुंचे 13 रनों पर, टीम का कुल स्कोर पहुंचता हुआ 68 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 68। लॉस ऑफ 2 विकेट नाउ, 158 द टारगेट ऑफ दिस मैच। SS Strikers team captain Windy Tosun elected to first field now.
A full-length ball played through the covers for another boundary of this over. Glorious drive by Ketan Biraris. Batting superbly at his position. Collected 2 boundaries of this over. At the end of 6 overs, the end of power play, SS Strikers have reached 72 runs. They're batting superbly with a strike rate of 12 runs per over. At the same point of time, Smashers, they were 49 for loss of 2 wickets. Even though SS Strikers have lost 2 wickets, but they have scored 72 runs. So in the pursuit of 158 runs, I think it's a good start. सही बात है अमित जी की, जिस तरह से हालांकि ये बल्लेबाज खेल रहे हैं, ऐसे स्ट्राइकर्स के बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उनकी दिखाई दी। अब तक कोई बॉलर ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या महेश जौहरी और विकेट लेने की कोशिश करते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे मिल सकते हैं उनके टीम के लिए। लेकिन जहां तक ऐसे स्ट्राइकर्स का सवाल, अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। ऐसे स्ट्राइकर्स ने 4 मैच खेले, 3 मैच जीते। A slight change in bowling. Dhaireshil Sonone has replaced Mahesh Zaveri. Mahesh Zaveri has been expensive. He's given her 20 runs in his first over. Swapnil Lokhande has brought in his left arm cutting through Dhaireshil Sonone to Rohit Surana. The required rate is only 6 runs per over. Played towards Cow's corner for a single. Easy single for Rohit Surana. He won't mind since the field restrictions are over. The fielders have been fall back onto the ground and it gives an opportunity to batsmen to take single. It is going to be interesting to see how Ketan Biraris go against Dhaireshil Sonone. A full toss ball played towards long off region. Sumit Chete. Meanwhile, he stops the ball, gave away another single. So far, so good. SS Strikers batsmen, they're not taking any risk, undue risk. Taking singles. Tried to play through his point region. A close call for Rohit Surana. ऋषि आए हैं गेंदबाजी के लिए। रोहित सुराना तैयार गेंद बल्लेबाजी के लिए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद गला के सारे मोड़ दिया था उन्होंने उसके लेग के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, लेग बाय का इशारा अंपायर का। रन किस तरह से बनते क्रिकेट में, कौन किसी की परवाह करता है, लेकिन रन आना बहुत ही बहुमूल्य होता है। यही एक एक रन हार और जीत के बीच में फैसला भी तय कर सकते हैं। 1 रन के साथ स्कोर 75 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। दरअसल तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार खेल जाता उन्होंने थर्ड मैन के क्षेत्र में। शॉर्ट थर्ड मैन से फील्डर आते, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर स्मैशर्स के खिलाड़ियों की। रन को बचाना पड़ेगा आपको। जिस तरह से हालांकि बल्लेबाजी चल रही है स्मैशर्स की, माफ करें ऐसे स्ट्राइकर्स की। अच्छा स्ट्रोक इस बार, और देखते हैं वहां पर कोई फील्डर नहीं, लेकिन स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद जाती हुई कारपेट के सारे खेला हुआ ये स्ट्रोक, जमीन को चीरती हुई गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक और इसी के साथ स्कोर 79 रनों पर पहुंचता हुआ दो विकेट के नुकसान पर। देखते हैं 79 पर 2 आने वाले गेंदबाजी के लिए। देखते हैं किसकी तलाश रहेगी, खास करके विकेट लेने पड़ेंगे स्मैशर्स को, खास करके दबाव में लाना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं इस वक्त, लेकिन ऐसे स्ट्राइकर्स का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है। SS Strikers are batting so good in pursuit of 158 runs. Ketan Biraris is batting on 22 runs in 8 balls with a strike rate of 275. Rohit Surana giving a good support to Ketan Biraris. Smashers, they are looking for wickets. They need wickets. And that's why they have brought Subodh Kothule. Left arm spin bowler. He's been very successful
in his last outing in N.C.A. PPL 2021. Subodh Kothare, a sought-after bowler for all the franchises in the auction. They need 79 more runs. SS Strikers, they're halfway through. They have scored half of their runs in 7 overs. So 13 overs and 79 runs for SS Strikers. Subodh Kothare, slow in the air. Ball rose to Rohit Surana. Did not expect to come so late onto the bat. Tried to play it to the onside, but ball did not come to the bat, so played towards covers for a precious dot ball. Another full length ball, played towards mid wicket for a single. Ketan Biraris wants two. Good running between the wickets and a sloppy fielding by smasher Sandeep Sonune. I believe there. 2 runs in the hands of Sandeep Sonune. A welcome Brijmohan Longani on the ground. Just to let your viewers know, we have another match coming up after this. Peru Warriors versus RS Challengers. Another full length ball, played through the covers. Subhash Par. There's a misfield down there. Pressure is creeping in onto the fielders as well. The first boundary of this over. सही बात सुभाष पवार द्वारा हल्की सी जो प्रेशर हालांकि बल्लेबाजों द्वारा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर हल्की सी फील्डिंग में मिस्टेक जरूर है और गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई। 4 रन के लिए सुभाष पवार। सुबह तैयार फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, खेल दिया था कवर के क्षेत्र में। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। यदि मंजिल सामने हो, लक्ष्य सामने हो, रन बनाने के लिए इतना कठिन नहीं होना चाहिए एक दिवसीय मैचेस में या 2020 मैचेस में। Another full length ball, play half in the air. Swapnil Lokhande coming down the ball. Raviraj Yadav bowling in, and a drop catch by Swapnil Lokhande, went backwards to take the catch. Almost hold out to covers to Swapnil Lokhande. A very important passage of play, important wicket. This will be a big miss, a match-turning catch for Smashers. सही बात है अमित जी की, कैच लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैच टर्निंग हो सकता था इस वक्त, हालांकि कैच लेते तो रविराज यादव उनके पास जाकर गिरे, शायद हाथ में लगकर, हालांकि सेकंड बाउंस भी मिल सकता है कैच लेने के लिए, तो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे रविराज यादव, और इसलिए उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया वहां पर जाने के लिए। लेकिन हालांकि होनी को कौन डाल सकता है, आखिरकार 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रयास अच्छा किया, लेकिन बैक जाने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत समय जरूर लिया, उसके हाथ से लगकर गेंद हालांकि डाउन होती हुई। इसी के साथ ये कैच देखते हैं, इस कैच हाथ से छूट जाते हैं अमित सर, कोई जानबूझकर नहीं छोड़ता है, लेकिन कैच लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। When you're playing on this level, I think these catches need to be taken. There are no excuses whatsoever. Meanwhile, the Rishil Sonaune, left arm cutting through. A full toss ball down the leg side, poor bowling, earned in the line, went down the leg towards fine leg, wide ball, 4 runs, 5 runs. 5 buys runs. This is not helping the cause for Smashers. They already have little than less power score to defend, and the bowlers, it hurts the cause. If they want to defend 157 runs, they need to be disciplined. Another full length ball, played towards his short fine leg again for another boundary. 2 consecutive boundaries in this over. Ketan Biraris, he is batting superbly with a strike rate of 245.
जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिली, कला के साथ उसे मोड़ दिया था उसके लेके ऊपर से, गेंद सीधी चली गई थी बाउंड लाइन को पार करते हुई, कारपेट के सारे खिलाफ हुई है स्ट्रोक, कोई जोखिम भी नहीं थी और गेंद बाउंड लाइन की तरफ चली गई 4 रन के लिए केतन बिरारी का ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक आता हुआ। 4 रनों के साथ स्कोर 96 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर रन अभी भी 62 रनों की जरूरत आने वाले 71 गेंदों में, 62 रनों की दरकरार आने वाले 71 गेंदे बाकी है। 71 डिलीवरीज टू कम नाउ, 62 रन रिक्वायरिंग। The way that the SS strikers are batting, I think it's getting difficult for smashers to stop these two batsmen as well. We have seen that initially in the morning, Piyush Dugar and Hitesh Guzar, they already had a plan. They want to take attack to the bowlers. They already started attacking Swapnil Marathe, their ace bowler, and that actually took the pressure of the batsmen and they put smashers under the pressure. Now, this time, Ketan Biraris and Rohit Sharma doing the same thing. Yes, it is Amit, I think that both batsmen playing so well, confidently batting today. Pressure for bowler, no. That's a typical response from a bowler. Shot of good length ball. An arm ball. Went with the arm. Ketan Biraris respectfully played towards curves for a single, taking his individual total 28 runs in 12 balls. Bringing Rohit Surana on strike, who's batting on 14 runs in 12 balls with 2 boundaries. They are scoring more than the required rate. Another shot of good length ball way outside the off stumps, trying to get away from the reach of a batsman. Dereshil Sonone bowled a precious dot ball. These dot balls have become very precious in this innings. A full length ball played towards corner. Rohit Surana for a single. He does not seem to be in a hurry. Ketan Biraris wants two, but Subhash Pawar with a amazing arm restricted batsman for a single. Now this is going to be an interesting contest between Ketan Biraris and Dereshil Sonone. 1 ball to go. 102 runs for SS Strikers. Played towards covers to Sachin Hange for a single. A good throw in the hands of Raviraj Zadav. I beg your pardon, there is still 1 more to go. One ball to go in this over. A shot of good length ball played towards point. A good field by Swapnil Lokhande. Went on his left, dived onto his left and stopped a confirmed boundary and saved 4 runs for his team. So at the end of 9 overs, Shardul Singh Strikers have scored 103 runs for the loss of 2 wickets. They required 55 runs in remaining 11 overs. The batting superbly in this innings. Subodh Kothare tossed up the ball, went high up in the air into the practice nets for a humongous 6 by Ketan Biraris. It seems that Subodh Kothare and smasher bowlers have no answer whatsoever for the onslaught of Ketan Biraris. What a batsman! What big hitting! Look at that. Subodh Kothare tossed up the ball and he went high up in the air. It went so high, might have kissed the air hostess and came down. Went into the practice nets. First humongous 6 of this match, bringing Shardul Singh Strikers 100. फिर एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला उन्होंने,
अंपायर का इशारा तब तक 2 रनों का आता हुआ, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ऐसे स्ट्राइकर्स का 107 रनों पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से हालांकि केतन बिरारी और रोहित सुराना खेल रहे हैं, एक अच्छी सूझबूझ की बल्लेबाजी दोनों खिलाड़ी की। सुबह फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, ऑफ स्टंप पर एक गेंद खेलना मुनासिब नहीं समझा केतन ने, जानी दिया विकेट कीपर के ग्लोव में बिना किसी दिक्कत के। हंड्रेड एंड 7 for 2। फिर एक बार ओवर पिच गेंद को आगे आकर उठा दिया उन्होंने, देखते अंपायर का इशारा देखते हैं वहां पर दोनों अंपायर बातचीत की। फिर बाद में 4 रन का इशारा था वह अंपायर के ओर से, 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 रनों पर, यानी नेल्सन स्कोर पर स्कोर पहुंचता हुआ 111 for 2। What a batting by Ketan Biraris. A shot of good length ball. Appeal for a cut behind. Turned down by the umpire. A good comeback. Ravi. Mind games have been playing now on the field. Raviraj Yadav pleading the umpires. Ketan Biraris, who's batting on 41 runs in 19 balls with 5 boundaries and 2 sixes. Still 1 ball to go of this over. Triple Nelson. Way outside the off stump. Now that's pressure. When your ace bowler is bowling way outside the off stump to get out of the reach of a batsman, that tells you how much pressure it is. Another ball played towards square leg region for another boundary in this over. To close this over, at the end of 10 overs, SS Strikers have scored 115 runs for the loss of 2 wickets, and they require 43 more runs in 10 overs. What a batting display, taking Ketan Biraris to 45 runs in 20 balls, 5 runs short of his 50, first 50 of this over. SS Strikers need 42 runs more in the 10 overs. Change in bowling. Swapnil Lokhande is coming from commentary box and right hand medium pace bowler. He has to do something, because the way that the SS Striker batsmen are batting, it seems that it's going to be a one-side affair. Yes, it is. I think that both batsmen playing so well, and 10 ओवर के समाप्ति 116 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 60 गेंदों का खेल बाकी है और 42 रनों की दरकरार, 60 deliveries to come now, 42 run requiring. Ketan Birari and Rohit Surana playing the confidently batting today, and Ketan, he knows that he will be stay there, and run will be counted and counted very speedily and fastly so far. खेल दिया था उन्होंने ऑन साइड में, देखते हैं कॉर्नर के खिलाफ क्षेत्र में जब तक फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन लेने में रोहित सुराना सक्षम रहे, 1 रन के साथ स्कोर 117 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अमित, Amazing confident batting by Ketan Biraris, 5 short of his 50. A shot of good length ball right into the hands of Raviraj Yadav. Raviraj Yadav trying all his tricks to get the batsman out. He is doing all the tricks in his kitty. They need wicket desperately. And Swapnil Lokhande, captain himself, has taken the onus on his shoulder. Can he give a breakthrough to smashers? Can he bring smashers back into the game? It's been seem like it's being a one-sided affair for SS Strikers now. The way that the SS Striker batsman Ketan Biraris is batting. Oh.
Shot of good length ball outside the reach of Ketan Biraris for the first extra of this over. Now that is being a problem with smashers. As I mentioned, when you want to defend a score which is below par score, you need to be disciplined in your bowling. You don't have much run to defend. Another shot of good length ball. Way outside the off-stumper batsman. Another wide. You can see how much the pressure is on a bowler. And that changes the bowling tactic. Swapnil Lokhande wants to stay away from the range of Ketan Biraris. Another shot of good length ball. Tried to play over the cow corner, but went straight to Sandeep Sonune for a single. Now these kind of misses, these kind of chances, they might create you to take a wicket. Swapnil Lokhande himself, he dropped Ketan Biraris when he was batting on 32. Is it going to be expensive for them? Another full length ball played towards cow corner. There is no one down there. Subhash Pawar in the pursuit of a ball, but in vain. The first boundary of this over. It seems that smashers are unable to keep these two SS strikers are scoring boundary in every over. It reminds me of the match when Raviraj Yadav and Fayaz were batting 2 matches before. They were taking boundaries at their will. Another full length ball played in the hands of Swapnil Lokhande, a dot ball. Still 1 ball to go of this over. 124 runs. They require 34 more runs in 55 balls. SS strikers. Rohit Surana on strike. Another shot of good length ball. Well left by Rohit Surana. He would not mind leaving these balls. You would see this rarely in T20 cricket. But SS strikers, they do have leverage to do this. So at the end of 11 overs, SS strikers have reached to 124 runs for the loss of 2 wickets. They require 34 runs in 54 balls. They've got Ketan Biraris on strike. 4 runs short of his first 50 of the season, and Rohit Surana batting on 20. केतन बिरारी खेल रहे हैं 46 रन पर 4 रनों की दरकरार उनको अपना पहला अर्धशतक पूरा करने के लिए इस टूर्नामेंट का। रोहित सुराना खेल रहे हैं 20 रनों पर 124 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऐसे ही गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सचिन हानगे को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। 124 रन अब तक, हालांकि 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट कितने गिरे जिसके बजाय रन कितने बने एक दिवसीय मैचेस में, तो यही देखना पड़ेगा। लेकिन देखते सचिन क्या करते हैं। Shot of good length ball played towards long on region. Looking for a boundary, but will get only a single. Good throw by Sandeep Sonun in the hands of Raviraj Yadav. The smashers are in search of a wicket. Sachin Hange. He's got an economy rate of 7.44 and a best of 3 for 13. Smashers have Vinod Kardile as well in the field. Subhash Pawar, Sumit Shetty. They have a good range of and types of bowlers in the kitty. Another shot of good length ball played towards cow corner. And a misfield. Went down to 4. Dhairyashil Sonaune being very lazy. That misfield led to the first boundary of this over. Rohit Surana must be very happy, taking his individual score to 24 runs in 19 balls. Another slow ball played in the hands of Sachin Hange. Rohit Surana would not mind this. Now the dot balls do not mind as strikers anymore. Smashers would like to take wickets if they want to come back into this game. Another full length ball played towards cow corner. Dilshil Sonone in pursuit of the ball. And a good stop by Dilshil Sonone. Restricted batsman to a 1 run. Definitely saved 3 runs for his team. Now these kind of efforts you will need if you want to win this game. Appreciated by Mahesh Zaveri in the slip.
It seems that the shoulders have been dropped. Ketan Biraris, has he got any stopping to him? Went high up in the air for a boundary and a 50 for Ketan Biraris. Swashbuckling batting by Ketan Biraris, 51 runs in 24 balls with 7 boundaries and 2 sixes with a strike rate of 212. Fourth away. A good dot ball. End of the overs. At the end of 12 overs, Shardul Singh strikers have scored 134 runs. They require only 24 runs in 8 overs. Ketan Virari is batting on 51. Rohit Surana batting on 25. Mesmerizing batting performance by SS strikers. Smashers, they have won only one game in the last 3 matches. This game was very much important for them to keep alive in this tournament. But it seems that SS strikers have taken the wind out of their campaign here. Swapnil Lokhande is back into attack from commentary box end. Rohit Surana will face. They require 24 more runs in 8 overs to go. स्वप्निल लोखंडे गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार अच्छी गेंद थी। रोहित सुराना आगे आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। 25 रनों पर खेल रहे हैं और 84 रनों की साझेदारी दोनों के बीच में तीसरे विकेट के लिए। 84 रन पार्टनरशिप बिटवीन रोहित सुराना एंड केतन बिरारी। स्वप्निल लोखंडे तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार गेंद बड़े लाल स्टंप पर कला के सर उसे मोड़ दिया था डीस खेले के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते दूसरा रन भी दोनों ने समझबूर के साथ लिया। पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरा रन फील्डर के ऊपर दबाव डालकर लिया। रोहित के पास ये कला है, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 रनों के साथ रोहित पहुंचे 27 रनों पर। टीम का कुल स्कोर 136 रन 2 विकेट पर। और स्टंप पर ये गेंद हल्की सी बाहर जाती हुई विकेट कीपर के ग्लोव में। कोई रन का इजाफा नहीं, डॉट के रूप में गेंद चली गई थी। टीम का कुल स्कोर 2 विकेट पर 136 रन 136 पर 2। वाइड का इशारा 137 रन 137 पर 2। 27 रनों पर खेल रहे हैं रोहित। स्वप्निल गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर एक बार अच्छा शॉट खेला उन्होंने। देखते हैं मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर तैनात थे। जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका रोहित के लिए। इस 1 रन के साथ रोहित पहुंचे 28 रनों पर। टीम का 51 रनों पर खेल रहे हैं केतन बिरारी। अभी अभी उन्होंने अपना आधा शतक पूरा किया। इस बार अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को, लेकिन बीट करने वाले गेंदों को नंबर कहाँ होते हैं। स्वप्निल लोखंडे जानते हैं बीट करने वाले गेंदों को नंबर नहीं होते। इसी के साथ ये ओवर की भी समाप्ति हुई। अभी भी 20 रनों की जरूरत
42 गेंदें बाकी है, 20 रन ड्रिंक्स मैदान के ऊपर जा रही है। इसी के साथ 42 गेंदें 20 रन। दोनों ही बैट्समैन, हालांकि एक लंबी पार्टनरशिप देखने को मिली दोनों खिलाड़ियों के बीच में। The way that the strikers have batted, they batted superbly well. Ketan Virari is batting superbly on 51 and 26 balls, and Rohit Surana giving a good full support of 28 runs in 26 balls with 4 boundaries. Amazing batting display by SS strikers. They have played really well in every section of this game. I welcome Atul Palkar on the ground, a centurion from the last match, 66 balls, 137 runs with 17 boundaries and 7 sixes. Sachin Hange. A shot of Goodland ball. Pull the ball towards cow corner for 2 declared runs for Rohit Surana. Not much of a win left in this match. 18 runs required. It's just a formality left, it seems. Dropped shoulders of smashers, not making it good. Another shot of Goodland ball went down the track. Rohit Surana tried to play over the long off region, but went in the hands of Subodh Kothare for a single, bringing Ketan Biraris on strike. The way that the Ketan Biraris have hit the ball today, it is commendable. He has done his job for his team. Another shot of Goodland ball. Tried to play towards covers. Swapnil Lokhande fielding there. Smasher bowlers have no answer whatsoever for the onslaught of Ketan Biraris here today. Oh, another shot of Goodland ball. A slower bouncer. Now pitch is doing its tricks. 141 runs for Shardul Singh strikers. Rohit Surana having a word with Ketan Biraris. He wants to finish this game with no wickets whatsoever. The required rate is 2.6 set. But if they close this game early, it will help them to get in net run rate to climb the ladder up. Another shot of Goodland ball played on the edge of Swapnil Lokhande. Subodh Kothare in the pursuit of misfield. Story of smashers today. Another boundary over covers. Ketan Biraris. He is hitting the ball at his will. And smasher fielders can do nothing but watch the ball sail over the boundary line every time he hits the ball. Still 1 ball to go of this over. 145 runs for loss of 2 wickets. Another shot of Goodland ball. Appeal for leg before. Inside edge must have turned it down. End of 14 overs. Shardul Singh strikers are batting on 145 runs with the required rate of 2.17. Ketan Biraris is batting on 55. Rohit Surana 31. Superb batting by SS strikers. छत्तीस गेंदों का खेल बाकी है और 36 गेंदों में केवल 13 रनों की दरकरार यहां पर एसएस स्ट्राइकर्स के लिए। शार्दुल सिंह स्ट्राइकर को मैच जीतने के लिए सुभाष पवार को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। परिवर्तन के दौर पर 145 रन 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन पर खेल रहे हैं रोहित सुराना, और केतन बिरारी खेल रहे हैं 65 रनों पर, 65 रनों पर, और 95 रनों की पार्टनरशिप बिटवीन दिस टू, केतन बिरारी एंड रोहित सुराना। As you have seen in the batting as well, Subhash Pawar has been brought so late in the batting lineup at the end of 17 overs, and even today he has brought back in after the end of 14 overs. So do you have any say on this, since Subhash Pawar has played an instrumental role in the last season to get his team to the finals? All these questions are going to be unanswered. Now we have Subhash Pawar, right arm over the wicket. He bowls with a right arm sling action. A steady customer.
short run up. As I said, right arm sling action, played towards a square leg, a flick shot by Rohit Surana. We have seen that he's got a good range of shots with him when he scored 50 runs against Smith Chandra Constructions. And today you could see easily played towards square leg. A good flick shot by Rohit Surana, taking the tally to 149 runs. 9 more runs required for SS Strikers. Way outside the leg stump, that could be a white ball. 5 extra runs. 5 extra runs for SS Strikers. They need 4 more runs in this over. Mere formality is remaining. A disappointing performance by Smashers. They are a good bunch of guys. They have good bowling lineup as well. They could have defended this total way better than what they have done now. Right in the block hole by Subhash Pawar. They have bowled really good in this over, but 1 or 2 odd balls which went down to the boundary had hurt the cause. A full toss ball played towards long off region. Sumit Shetty coming behind the ball for a single. Require 3 more runs. SS Strikers requires 3 more runs to win this game. Ketan Birar is batting on 55. Rohit Surana batting on 36. 155 runs for the loss of 2 wickets in 14.3 overs. Can he finish in this over? Ketan Biraris. A full toss ball. Tried to finish in style. Went to the long off to Sumit Shetty for a single. 2 more runs required. केवल 2 रनों की दरकार यहां पर शार्दुल सिंह स्ट्राइकर को मैच जीतने के लिए। रोहित बल्लेबाजी के लिए और वाइड का इशारा ऑफ स्टंप पर पड़कर गेंद और बाहर जा रही है। वाइड का इशारा और स्कोर इस वक्त बराबर का। केवल 1 रन चाहिए शार्दुल सिंह स्ट्राइकर्स को मैच जीतने के लिए। 8 विकेट उनके हाथ में शेष। एक बड़ा मुकाबला जीतकर हालांकि आगे जाने की तैयारी यहां पर शार्दुल सिंह स्ट्राइकर्स की। और फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, केवल औपचारिकता निभाना बाकी। इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप पर अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने ऑन साइड में। फील्डर वहां पर तैनात का कॉर्नर के ऊपर, लेकिन तब तक 1 रन लेने में कामयाब रहे और इसी 1 रन के साथ हालांकि एसएस स्ट्राइकर्स ने ये मैच 8 विकेट के साथ जीत लिया। जो भी जीता सिकंदर, लेकिन जो हारे उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए। स्मैशर्स को पराभव का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई केतन बिरारी और रोहित सुराना ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, खास करके 2 विकेट गिर जाने के बाद। लगभग 100 रनों की साझेदारी दोनों खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिली तीसरे विकेट के लिए। ये देखिए खुशियों का इजहार मैदान के ऊपर चल रहा है। अच्छी बल्लेबाजी की 58 रनों पर केतन बिरारी नॉट आउट रहे।